morning, everyone. Good morning. Good क्या morning, हाल है sir. क्या हाल है आप लोगों का? Yeah, the topic is product life cycle. Have you heard about it? Product life cycle. कभी सुना है इसके बारे में? Product life cycle is a concept which depicts the different stages in the life of a product. When you introduce a product in the market or when a product is being developed, so from its introduction till its last, the first stage is introduction, the second stage is growth, the third stage is maturity, and the fourth stage is decline. So these are the four main stages in the which comes in the life of a product. In the stage of introduction, this is a stage where the product is researched, planned, developed, and introduced to the target market. Target market is something which we have already discussed. There is no fixed time allocated to this phase, but the shorter it is, the cheaper the marketing and the more profitable will be made. देखिए, आप खुद ये मत बताइए कि जब कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है या कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसमें क्या सिनेरियो होता है उस स्टेज पे? एक कंपनी का जो मेजर एक्सपेंडिचर है वो उसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है. The product is being introduced in the market, so they are advertising it, they are marketing its benefits to the targeted customers. That is why they are asking you to keep it the introduction period shorter, because as shorter as it is, as shorter is it profitable would be. जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, because in that case the company is not going to spend a lot on the advertisements. The next stage is growth. This is a stage where the product is growing and thriving in the market. The customer loyalty is being developed. Customers are attracting towards the product. They are showing interest in the product. During this stage, the farmer must ensure consistency, quality, and quantity. Because in the growing stage, the demand of the product is increasing. So what the farmer, or in general terms, the manufacturer, what he needs to do, he needs to show some consistency and definitely the quality and the quantity, because demand is increasing in the market. So it is a responsibility of the farmer to maintain the supply quantity. And if the farmer is unable to maintain the consistency, to maintain the quality, to maintain the quantity required in the market, if he fails to maintain, then definitely the product will fall in the market and will be vanished out immediately.
उसके बाद ग्रोथ स्टेज से निकलने के बाद आती है तीसरी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज. Maturity stage is like a best stage for the in the life of the product, because at this stage all the required expenditures for sustaining it in the market had already been done. Now the situation is like the product has gained total customer loyalty. Am I audible to you guys? Yes, sir. Yes, sir. इस स्टेज में क्या है कि पूरी कस्टमर लॉयल्टी मिल चुकी. There are no need to spend further amount in marketing or advertising the product. The customer is with you. You are getting the benefits and the revenues. Just that's it. And the most hazardous thing for this maturity stage is the competition. Maturity stage has no such time limit or the upper capping. This limit cannot go beyond this period. This is not like that. It goes forever as well. But the only problem with this maturity stage is the competition. Only threat to the to surviving this maturity stage for a longer period of time is the competition in the market. And the last stage is decline. Decline क्या स्टेज है आप बताइए. ये डिक्लाइन वो स्टेज है जब जो कस्टमर आपके साथ था उस कस्टमर ने साथ छोड़ दिया. They have started buying other products. That is why I told you in the maturity, the main threat for the maturity or for the benefits of the maturity stage is the competition. Because at any point of time, the preferences of the customers will get changed and he will start buying and start preferring other products rather than the existing product. In that case, the demand of the product will immediately drop or immediately starts decreasing. अब इस स्टेज में मैन्युफैक्चरर को क्या करना चाहिए या फार्मर को क्या करना चाहिए. दे नीड टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. भाई जब तक अब, और यहां मैं आपको एक बात बता दूं, यहां इस कॉन्सेप्ट काम करता है इनोवेशन का. यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट or something which is not even existed in the market. This is the way to sustain in the market. समझ में आ रहा है आपको. बताइए सर, ये चारों स्टेजेस समझ में आ गए. देखिए एक एग्जांपल मैंने दिया है, जरा सा एग्जांपल को देखिए.
ये एग्जाम्पल देखा है आप लोग? देखिए, आप ये देख रहे हैं मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस हैं, इसमें क्या कंडीशन होती है भाई? जब आप इंट्रोडक्शन स्टेज में होते हैं, योर प्रोडक्ट इज टेकिंग ऑफ इन द मार्केट, द सेल्स आर वेरी लो, high cost per customer because the cost of production is high, the production is very limited, and the expenditures in the marketing and advertising are very high. And definitely the few competitors, because the product is new in the market and others have not started copying it. What about in the growth stage? In the growth stage, the sales are increasing, and when the sales are increasing, the production is increasing, then definitely the cost per customer will also decline. Profits rises, increasing the customers, because customers are getting attracted to your product is kind of getting attention from the customers, so the competitor will also increase in the market. And the top stage is maturity, the sales at its maximum or at its peak, the cost per customer is lowest because there is no such expenditure on the advertisement, there is no such expenditure on the promotion, the demand is very high, the production is very high. So the cost per customer is very low or minimal. Profits are very high. And again, the competitors are also there. And in the last stage, that is on the decline, the sales starts falling because the customers have buying or is preferring to buy something else. And this is called the diffusion process. This diffusion process, ये आप जरा सा याद रखिएगा, diffusion process कि इसमें ये कस्टमर्स की कैटेगरीज बनाती हैं, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लैगर्ड्स. इनोवेटर्स कौन होते हैं? देखिए, टोटल कस्टमर्स में से 2.5% इनोवेटर्स होते हैं जो किसी नई चीज को मार्केट में ढूंढते हैं कि साहब ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, इसको ले लो. अर्ली अडॉप्टर्स वो होते हैं जो इमीडिएटली जब इनोवेटर्स उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, बिकॉज इनोवेटर्स आर वेरी फ्यू, ओनली 2.5% ऑफ द टोटल मार्केट पॉपुलेशन.
So early adopters are those which buy it just after the innovators. Early majority is the sect or the a cluster of customers, those who prefer to hold it and to check the views of the early adopters. And if they find them well, they buy the product. And similarly, the late majority are those who generally are not inclined, but after the time testing it for a very long time in the market, they also start prefer to buying it. And the last category is laggards. Laggards are those who do not accept any innovation in the market. They will always prefer to be stuck with whatever they are using or buying. इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ये बताइए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझने में। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ये बता ही दे रहा हूं। Sir, what is the difference between early majority and late majority? अर्ली मेजोरिटी एंड लेट मेजोरिटी में बस सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। लेट मेजोरिटी बहुत टाइम के बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर आती है, अर्ली मेजोरिटी कंपैरेटिवली जल्दी है। अच्छा, अब इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि कितना टाइम है। आप जब उस स्केल को देखेंगे तो आप उसमें ये देख लेंगे कि जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल 5 साल के बाद लिया, उन्हें अगर आप अर्ली मेजोरिटी मान रहे हैं, तो जिन्होंने 10 साल के बाद लिया है आप उन्हें लेट मेजोरिटी मान लेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर। ओके बॉस? Okay, sir. Now guys, the next topic is pricing strategies. यार एक बात ही बताओ, आप लोग ज्यादा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो क्लास में? ये क्या रीजन है? क्यों बॉस? आप लोगों का रिस्पॉन्स रेट थोड़ा स्लो है। सर रिस्पॉन्स ऐसा ही करते हैं सर, कुछ रोजों की वजह से, इसलिए या फिर अच्छा अच्छा।
So that what factors need to be considered while setting the prices? This is a very important question before every manufacturer or before every farmer. What factors they need to consider? And one more thing I'm telling you that while studying the marketing of while studying the marketing of agricultural products, it doesn't mean that you are studying to market the farm crop or farm production, or definitely not only the farm production. Actually, by and large, you are studying the entire concept of agricultural products, the processed agricultural products mainly. So, what factors? Guys, we are running short of time. I think I'm just reconnecting it. You need to rejoin, okay? Please rejoin. Okay, sir. The importance of setting a price for the product. Don't you think it is difficult for the organization to set the prices for their product? आपको नहीं लगता ये कि ये डिफिकल्ट चीज हो सकती है? क्यों सर बताइए? प्राइस की सेटिंग सर जी देखिए, दो पोजीशंस हैं कंपनी के सामने। एक पोजीशन तो ये है कि वो प्राइस को इतना हाई कर सकती है कि उसके बियॉन्ड जो है डिमांड खत्म हो जाएगी, पीपल विल स्टॉप बाइंग इट। सो दिस इज द अपर कैपिंग। दूसरी सिचुएशन क्या है, वो इट स्टार्ट्स लोअरिंग डाउन द प्राइसेस। जस्ट अ मिनट। Yes, there is a lower capping because the company can keep lowering down the prices up to a level where they will not get any profit. So they have to fix the prices between these two limits. That is the upper limit and the lower limit. Upper limit कौन सी हो गई? जिसके आगे कोई उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। और लोअर लिमिट कौन सी हो गई? जिससे नीचे अगर वो जाएंगे तो उनके प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे। क्या गया? कस्टमर परसेप्शन ऑफ द वैल्यू लिखा हुआ है इसमें। इट सेट्स द अपर लिमिट फॉर द प्राइस, दैट द कंपनीज कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, otherwise nobody is going to buy their product. And what about the production cost? It sets the lower limit for the price in the long run. Lower limit इसलिए क्योंकि what is, just tell me that what is the point of doing business, or what is the point to be in the market if you are not getting the profits from the market? Is there any point? भाई क्या मतलब बनता है मार्केट में रहने का अगर बिजनेस करने में कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा हो? कोई समझदारी है मार्केट में रहना फिर, या कोई बिजनेस करना? नहीं सर। अदर एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिडरेशंस में क्या आता है? ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड मिक्स,
organization considerations, market and demand. उसमें एक चीज ये भी देखनी होती है कि साहब मार्केट की क्या पोजीशन है. As I told you about the different scenarios of the market, like when there is pure competition, there is monopolistic competition, there is monopoly, there is duopoly. This is also very important. In monopoly, nobody is going to ask you at how much prices you are charging, why you are charging. But in monopolistic, the slight product differentiation is there. People will start buying the substitute because they are not ready to pay high prices. The next is competitors' strategy and prices. That you also need to be very, very careful while fixing the prices of the product, because you need to make sure that what your competitors are charging for the similar product. अगर एक चीज हमें 50 रुपए में मिल रही है और उसी तरह की चीज हमें 150 रुपए में मिल रही है, तो हम डेफिनेटली किसके साथ जाएंगे? 50 वाला, because there is no such product differentiation, there is no such difference in the quality of the product, but there is a difference in the prices. If the competitor is selling it at a lower price with almost similar features, then definitely your product will not sustain in the market. Then next is new product pricing strategies. Look, there are two, by and large, there are two main product strategies, pricing strategies for new product, or for those products which are being introduced in the market: the skimming prices and the penetration prices. Do you know the difference between those prices? देखिए, जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो दो तरह से लाया जा सकता है. एक तो वो ऐसे लाया जा सकता है कि बहुत हाई प्राइसेस के ऊपर उसको मार्केट में लॉन्च करें और थोड़े टाइम तक उसको हाई प्राइसेस पे सस्टेन रखें, so that due to the high prices the product will get a class in the market or will get a classification as the high-end product in the market. And after getting that standard in the market, you will start lowering down the prices. When people will see that the prices of this product is decreasing, then immediately they will start buying that product. क्योंकि पहले आपने उनका जो माइंडसेट है वो इस बात के लिए बना दिया that this product is a high-end product. अब उनको लगता है कि यार इतना high-end product है, and the company has started reducing the prices due to any reason, so we should buy it. Immediately they will start buying that product. The second is penetration pricing. Penetration pricing is that when you launch your product in the market with minimal prices and definitely with much lesser than your competitors are charging. Even sometimes the company introduce the product with the losses. Their pricing is so low that they are not even getting any profits, but they are facing the losses. They are paying for the production cost from their own pockets, just because their main objective is to remove the competitor from the market. That's it. इतने prices को lower ले आओ कि आपको loss होने लगा.
अब सारे जितने आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बैठे हैं वो कोई लॉस लेने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप मुझे, स्कीमिंग प्राइसिंग की और पेनिट्रेशन प्राइसिंग की? क्या चीज? ठीक। ठीक। ये जियो रिलायंस ने सिम जब सर। जियो जियो लॉन्च किया था मार्केट में, तो फ्री में लॉन्च किया था। रिलायंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इंडिया अपने मार्केट से कॉम्पिटिटर्स को हटाना था। उसके बाद क्या हो सकती है प्रोडक्ट की? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। Product line pricing means that you need to make sure that there should be no clash between the pricing of the product line. प्रोडक्ट लाइन समझते हैं आप लोग कि डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स उस प्रोडक्ट के, विद सम एडिशनल फीचर्स, विद डिफरेंट प्राइस रेंज। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या ये, तो पूरी प्रोडक्ट लाइन देखते हैं आपके साथ, इसका ये कंपनी फ्रिज, ये वाला फ्रिज इतने का बना रही है, ये थोड़ा सा बेटर हो गया, ये थोड़ा सा और बेटर हो गया, ये सबसे चीप सेगमेंट है। उनकी प्रोडक्ट लाइन में कभी भी प्राइस क्लैश नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग मीन्स the pricing of those products which are being sold optionally to the customers while buying the core product, like the accessories of the vehicle. The next is captive product pricing. Captive product pricing is the pricing of those products which need to be used or without, which need to be used for while using the core product. If the captive pricing, product pricing is high, definitely it will have an impact on the demand of the core product. The next one is byproduct pricing. Byproduct pricing is to lower down the prices of the byproduct as much as possible, because they are main objective is to not to get profit from it but to dispose it off. आप लोग उसमें देखते हैं न्यूज में अक्सर उसका आता है, खास करके जब विंटर्स आने वाली होती है, पराली का, जो किसान अपनी पराली जला देते हैं। ये हरियाणा, पंजाब, ये पूरा नॉर्थ का रीजन जो है वो कई दिन तक बिल्कुल उसमें रहता है, धुएं में। और उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग मींस कॉम्बोज, कि भाई अगर आप ये तीन चीजें एक साथ ले लेंगे यू विल गेट दैट मच डिस्काउंट। उसके अलावा प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस हो सकते हैं। सेगमेंटेड प्राइसिंग में मींस द डिफरेंट प्राइसिंग फॉर द कस्टमर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। Those who are coming from the hilly region, the prices are different. Those who are coming from the plain, the prices are different. And those who are coming from the state or the district where the plant is located, definitely the product prices will be different for them. Psychological pricing, 99.95, what it is? बताइए।
भाई साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ये है कि आपसे 100 रुपए नहीं चार्ज किए जा रहे, वी आर चार्जिंग 99.95 फ्रॉम, दैट्स इट। और प्रमोशनल प्राइसिंग क्या होती है? प्रमोशनल प्राइसिंग में आप टेम्परेरीली अपनी प्राइसिंग्स को रिड्यूस कर देते हैं, उसके बाद बढ़ा देते हैं बाद में। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग क्या है? It is also similar with the segmented prices, or segmented prices are depend on the segments of the customer, that you can divide the customers on different segments. कि भाई students हैं, if you are producing your identity card and if you prove that you are a student, you will get an additional discount. And geographical pricing is just related with to segment the market on the basis of their geographical positions. आप न्यूज़पेपर पे देखते होंगे, आप कई प्रोडक्ट्स पे देखते होंगे कि लिखा होता है कि इतनी स्टेट्स में इतने का, इतनी स्टेट्स में इतने का है। The next one is dynamic pricing. Dynamic pricing is something which used to be followed by the airline sector, but nowadays it is being followed by the Indian Railways as well. It depends on the time. जितना टाइम कम रह जाएगा उतनी ही प्राइसेस बढ़ जाएंगी। And the last one is international pricing, to keep the prices at par with the in the international market. Guys, in this pricing, any point which is not clear to you? सर डायनेमिक प्राइस को एक बार बता दें। भाई अब रेलवे का टिकट जब बुक करते हैं अपना, कभी रेलवे का टिकट बुक किया है आपने? यस सर। अगर 2 महीने पहले होती है तो टिकट की प्राइसेस अलग होती हैं, अगर 2 दिन पहले करते हैं टिकट की प्राइसेस अलग होती हैं। जैसे जैसे टाइम कम रहता जाता है वैसे वैसे टिकट की प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। तो डायनामिक प्राइसिंग में कोई एक प्राइस नहीं होती है। टाइम पे जिसने 2 महीने पहले बुक किया था वो उसको 400 रुपए का मिल गया, जिसने 2 दिन पहले बुक किया था उसको 2000 रुपए का मिल रहा है। दिस इज द डायनामिक प्राइसिंग। ओके सर। एनी मोर क्वेश्चन, एनी मोर क्वेरीज? सर जियोग्राफिकल प्राइसिंग क्या है? आप कश्मीर से हैं क्या? नो सर, हरियाणा। हरियाणा। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग ये है कि यार हिली रीजन में प्रोडक्ट्स को ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन बहुत आ जाता है। You cannot sell the product at par prices in plains as well as in hilly areas. या फिर जो एरियाज डिस्टर्ब है वहां पे बहुत रिस्क है, तो वहां पे प्राइस हाई हो जाता है। ओके सर, अंडरस्टूड। Anything else, guys?